हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीक पटेल फ्रॉम निफ्टीमिलियनर। आप लोगों का काफ़ी फीडबैक आया जो हमने लास्ट वीक एक वीडियो अपडेट किया था, जो नया सीरीज़ शुरू किया है। एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक। सो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लोबल मार्केट कैसा लग रहा है एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट फॉर अस एज ए इन्वेस्टर, एंड इंडियन मार्केट भी कैसा लग रहा है एंड कैसे अगला हफ्ता और अगले नेक्स्ट फ्यू वीक्स टू मंथ्स हमें अप्रोच करना चाहिए मार्केट में। सो बिफोर दैट देर इज़ अ डिस्क्लेमर कि ये जो भी मैंने ये जो वीडियोस बना रहा हूँ वो आप लोगों की लर्निंग के लिए बना रहा हूँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी एक अकाउंटेबिलिटी के लिए बना रहा हूँ कि अगर मुझे ये देखना है कि मैं 2 महीने पहले क्या सोच रहा था, 2 महीने पहले क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था और उसके बाद मार्केट ने अपॉर्चुनिटी को कैसे रिएक्ट किया, तो बेसिकली दिस इज़ माई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस ऑल्सो। सो मेक श्योर दैट ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको एक लर्निंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, and you can also study yourself and find out the opportunities, right? So let's start today's की सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट। सो ग्लोबल मार्केट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स अगर हम देखें, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स इज S&P 500 जो यूएसए की टॉप 500 कंपनीज का इंडेक्स है। एज वी कैन सी जैसे 2020-21 में एक वाला बुल रन आया, जैसे इंडिया में भी आया वैसे यूएस मार्केट में आया, राइट? बट उसके बाद अगर आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली मार्केट इज इन अंडर प्रेशर, राइट? बट फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट यू कैन से फ्यू मंथ से अगर आप देख सकते हो तो एक कॉन्सोलेशन में है। सो टिल दिस कॉन्सोलेशन डज नॉट ब्रेक आउट, आई वुड कंसिडर दिस इज अ लॉन्ग टर्म अंडर प्रेशर. We should not break these 3500, and if we want a great risk on across the global market, then we need market at least to go above 4300 and sustain for next few weeks, right? So make sure आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का एनवायरमेंट क्या है। सो मार्केट का एनवायरमेंट अगर आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको चार्ट में दिखाया, इट इज़ इन अ लॉन्ग टर्म अंडर प्रेशर, राइट? सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट इंडेक्स जो लास्ट बुल मार्केट का लीडर था इन यूएसए। एज यू कैन सी नास्डैक, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी कंपनीज का फोकस इंडेक्स है। यहाँ पे बहुत सारे मल्टी बैगर्स क्रिएट हुए एंड बहुत सारा वेल्थ दुनिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने आईटी स्टॉक्स में पैसा बनाया। बट एज यू कैन सी दैट लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर 2 ईयर और सेम वे जैसे S&P कंसोलिडेट कर रहा है, अब यहाँ पे भी देख रहे हो कि कंसोलिडेशन हुआ है। when can I consider it is a new bull market, or maybe market is starting a new uptrend? So for that I need Nasdaq. अगर आप देखेंगे तो exactly I can tell you the levels, right? 1 minute, yeah. So अगर आप Nasdaq देखेंगे तो 13,700 और मोटा मोटी you can say 14,000. We need Nasdaq to stay above 14,000 for next जब भी वो क्रॉस करे a few weeks and then create a base, right? So we can start it that it is again starting a new bull run. Till then it is a long term under pressure. So let's look at, आज हम सब लोग इंडिया में देखते हैं कि निफ्टी एट नियर टू ऑल टाइम हाई, राइट? बट जो इंडिया के सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टर्स है, राइट? सो होप यू ऑल नो दैट इंडिया में सबसे लार्जेस्ट होल्डिंग अगर देखे जाए क्यूमुलेटिव तो दैट इज FIIs, राइट? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्ड अ मैसिव चंक ऑफ द इक्विटीज। सो उनके लिए क्या सिचुएशन है? हम सब लोगों को लगता है कि इंडियन मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है काफ़ी सालों से, बट इफ़ यू सी फ्रॉम 2008, आई विल शो यू इन द चार्ट ऑल्सो, बट 2008 टू टिल नाउ दे हैव नॉट मेड मच मनी, राइट? देयर इज नो बुल मार्केट फॉर द FIIs. सो आप देख सकते हो इंडियन रुपीज़ टर्म में, राइट? जो निफ्टी हम देखते हैं सब लोग रहेगा, वो भी आप देख सकते हो लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल से इन अ कंसोलिडेशन एंड you can say long term under pressure, right? So same way you can see the situation across the globe. तो मार्केट का एनवायरमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म अंडर प्रेशर है, थोड़ा ऊपर जाता है देन अगेन कुछ न्यूज़ आते हैं नीचे आ जाता है। तो मार्केट इज इन बेसिकली इन द रेंज फ्रॉम लास्ट 1.5 years across the globe, right? There are few index in the world that are hitting the 52-week high, but if you see the majority they are into either downtrend or either they are consolidation from last 1.5 years, right? So let's look at the, ये देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इंडियन करेंसी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी कितना डाउन है टॉप से, लेट्स सी, ओनली 3%. बट अगर देखें रियल टर्म्स में जो FIIs के लिए क्या है इंडियन मार्केट का सिचुएशन, तो दिस इज अ डॉलर टर्म में निफ्टी है, अगर आप देखेंगे 21% डाउन है,
सो बिकॉज वैन जब भी एफ इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए दो रिस्क है. इंडिया के इन्वेस्टर के लिए एक ही रिस्क है, वो है इक्विटी का रिस्क. उनके लिए करेंसी का भी रिस्क है. बिकॉज अगर आप देखेंगे हमारी करेंसी बहुत डेप्रीशिएट हो गई अगेंस्ट द डॉलर इन लास्ट few months, right? Let's see USD INR. So that is a loss. जब इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट होती है वो भी उनके लिए एक लॉस है, राइट? सो एज यू सी 11% करेंसी डेप्रिशिएट होगी ऑलमोस्ट लास्ट जनवरी से लेकर अभी तक. सो जो एफ है उनके लिए कोई ऐसा बुल मार्केट नहीं है एज ऑफ नाउ इंडिया में. अगर आप देखेंगे 2018 में जो था निफ्टी इन अ डॉलर टर्म्स आज भी वही है. And if you see in a 2008 terms, right, what they have made in India, इंडिया में आके उन्होंने क्या बनाया एग्जैक्टली जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है यहाँ से, राइट? 1 minute, let me show you. Yeah. तो अब देखेंगे उनको 31% रिटर्न बनाया ऑलमोस्ट 2008 से लेके 23 आज हो गया, तो ऑलमोस्ट 15 साल में. सो दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू सी वन ऑफ द बेस्ट बुल मार्केट जो हमने 2002 से 2008 में देखा. आप स्मॉल कैप देखेंगे जो डॉलर टर्म में स्मॉल कैप टेट 2008 हाई 18 हाई, राइट? सॉरी नॉट 8 हाई, 18 हाइज, राइट? सो देयर इज नो सच बुल मार्केट. एंड इफ यू सी स्मॉल कैप इन डॉलर टर्म as you are able to see consistently same, you can see Nasdaq में जो था S&P में था same way, right? Long term under pressure. So there is not a great risk on environment, right? This is a good thing if you want to see dollar index. So dollar index should not be strong, right? If you want a good risk on across the, so this is very good sign for equity, जो इक्विटी और जो जितनी भी रिस्की एसेट्स है. बट इट इज अगेन कमिंग टू द लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट. विल इट ब्रेक डाउन? आई थिंक जो नैरेटिव बना है ग्लोबली डी डॉलराइजेशन और जितना नैरेटिव बना है मुझे लगता है कि मे बी मार्केट कैन सरप्राइज ऑन दिस साइड. या till it does not break 100, I am betting that it can go again maybe 104, 105 or something like that. If it breaks 100, then we can look for 95, 92 around, and that will be a good thing for us as an investor. Then let's look at easy to risk on. So देखते हैं कि consumer discretionary और FMCG. So अगर आपको गुड बुल मार्केट चाहिए, इफ़ यू वांट अ रिस्क ऑन एनवायरमेंट, योर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये जो कंपैरिजन मैंने किया है वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वर्सेस एफएमसीजी. सो जब बुरा टाइम आता है तो इन्वेस्टर्स लुक फॉर द डिफेंसिव स्टॉक्स लाइक एफएमसीजी एंड ऑल थिंग. जब उनको मार्केट में अच्छा लगता है तो दे मूव मनी आउट फ्रॉम एफएमसीजीज टू द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जहाँ पे लोग अपना एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं. आप देख सकते हो जहाँ से आपका पोर्टफोलियो भी टॉप आउट हुआ होगा या इंडियन मार्केट या ग्लोबल जो भी आप रिस्क, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मिंग एफएमसीजी सेक्टर, एंड दिस इज नॉट गुड साइन, राइट, ऑन अ रिस्क ऑन पर्सपेक्टिव. आप देख सकते हो जब आपका बुल मार्केट आया था 2020 में, राइट, जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुल मार्केट, व्हाट यू आर सीइंग, द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वाज आउट परफॉर्मिंग एफएमसीजी. This is what you need for a good bull market, right? Where you make so many easy money, right? Let's see what your currency is doing. Let's see. Okay, yeah. What do you want? I want to see, like, बोलते हैं ना कि extraordinary, aggressive, risky, you can take leverage. This is not a period, right? What? Your currency is consistently underperforming, right? I want currency to at least break 80 on a consistent basis, maybe 1 week or 2 week, 3 week, right? Then you can see one good period to go very aggressive. Let's see. So it is showing that mota moti the money is not coming to the India in a broader term, right? Money is moving out of India. We want, because अगर आप देखेंगे इंडिया में मेजर बायर्स कौन है, एक है म्यूचुअल फंड्स, राइट, देन एफआईआईज आपकी, देन आपके एक रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट. जब मार्केट कब तकलीफ में आता है, जब म्यूचुअल फंड्स आर बायर्स, एफआईआईज आर सेलर्स, तो मार्केट क्या आता है, प्रेशर में आ जाता है. रिटेल इन्वेस्टर्स तो सेंटिमेंट के अकॉर्डिंगली चलते रहते हैं. वी वांट
our mutual funds not to be a seller much, or maybe a neutral, or maybe net buyer. We want our FIAs to buy. That's where you see one of the good money making opportunities right now. कुछ दिन वो बाइंग करते हैं एफआई, कुछ दिन के बाद अगेन सेलिंग कर लेते हैं, राइट. सो वी आर नॉट सीइंग सम ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ कंसिस्टेंट बाइंग, राइट, ऑन वीक बेसिस, मंथ ऑन मंथ बेसिस, राइट. अगर वैसा होगा तो आपका करेंसी विल नॉट be a depreciation. Currency will become stronger compared to the dollars, right? So I hope it is clear with you that which environment we are in. So some of the good results I have seen, right? So let's we talk about the company. I think this is the most hated company, right, in India. Everybody has IPO के बाद बहुत सारे jokes बने कंपनी के बारे में, बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया. But I think कंपनी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, राइट. कंपनी में जो लॉस मेकिंग था, कंपनी अपने लॉस को कट कर रही है कंसिस्टेंटली. यू कैन सी दैट. आपको यहाँ पे दिखेगा कंसिस्टेंटली EBITDA नंबर. तो अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर 700 करोड़ का लॉस था, अभी ये 141 करोड़ का है. नेट प्रॉफिट 203 करोड़ माइनस है, 689 करोड़ है, 1800 करोड़. सो सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का लॉस कम हो रहा है. दिस इज वेरी गुड. दिस सीम्स टू बी अ टर्न अराउंड, राइट, इन अ कंपनीज अप्रोच. कंपनीज अगर आप देखेंगे तो कंपनी इज टर्निंग. सो काफ़ी लोग बोलते हैं कि पेटीएम उड़ जाएगा, नहीं होता. आई थिंक पीपल डोंट सी द रियलिटी. पेटीएम के पास अगर आप देखेंगे, जस्ट ये अभी जो राइट इशू किया उसके पास, उनके पास 9,000 करोड़ का कैश है. 9,000 करोड़. हाउ मेनी कंपनी इन इंडिया विल हैव 9,000 करोड़ के अराउंड कैश ऑन देयर बैलेंस शीट? सो समटाइम आई डोंट अंडरस्टैंड दैट पीपल आर वेरी फार फ्रॉम द फैक्ट, राइट. लोग बहुत दूर होते हैं सच्चाई से कि 9,000 करोड़ जो कंपनी के पास कैश है, वो कंपनी उठ कैसे सकती है. एंड नाउ दे आर फोकसिंग ऑन कंसिस्टेंटली लॉस को कम कर रहे हैं, और मे बी दे विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में. तो आई थिंक दे आर एक्चुअली इन टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट नियर बाय, एंड दे विल बी ए मोटा मोटी प्रॉफिटेबल इन नेक्स्ट 1 or 2 years, जिस तरह से वो मैनेजमेंट का कमेंट्री है, राइट. So there are some good signals we are able to see in Paytm, right? Let me explain, why I do think there is a good opportunity in front of us. Let me, show you, by a simple analysis, yeah. I am moving to the daily chart, right? Can you see this, some good rejection. There was a huge selling, right? It was the highest selling. Stock consistently went down, then stock came again up, but there was not some good volume, right? Again breakdown. Then you see the stock has moved on some big thing, and there was a huge volume, right, in that period. So till, I think Paytm does not goes, below 560. And if you see broadly, right, let me show you, broad chart, yeah. Stock has been a consolidation from last RBI ने जब उनको बैन किया, तो वहाँ से लेके अगर देखेंगे तो broadly in a big range, right? And there is a huge volume has happened in the downside, right? It looks like there is a good accumulation that has happened in this stock. So I am looking, and personally I have some holding into Paytm, right? So let me show you, why I like it. So मैंने आपको जो बताया, and result is also some good improvement over. So I think till Paytm is above 550, 560, you can look for. We can look for, first is 850. Then we can look for, almost 1 minute, yeah. We can look around, some जहाँ पे selling और ये zone 1000 से 1200 का, right? So there is a good upside from here if we see in the market, right? And stock is also outperforming the Nifty from last few weeks. So there is good upside, almost 60 to 80% in next maybe 1.5 years, right? We don't know when it will come, but there is a good opportunity in front of us. So let me see. The next stock is Selan.
As you can see, the numbers year on year has been improved, but if you see quarter to quarter, the numbers are little bit not better. But what I like about this stock, I will explain you, right? So I will explain you that I was reading the presentation, the let me show you ना, मैं आपको स्क्रीनर पे दिखाता हूँ. Selan. There is a one big change in this company is a company management change. There is some black bug energy investment that company has a takeover the management, and company has been having a new management from June 2022, right? That is a one trigger. Second thing, कंपनी ने काफ़ी टाइम के बाद प्रेजेंटेशन डाला और मुझे जो बहुत अच्छा लगा, लेट मी एक्सप्लेन यू नो. ओके, 1 minute, या. ओके, सो अगर आप देखेंगे ये कंपनी बेसिकली गैस और ऑयल एक्सप्लोरेशन में है. सो कंपनी अप्रैल 23 जो अभी तक है 503 BOPD, right? That is a terms in exploration. From Bakrol and Lohar, कंपनी की जो दो जगह है जहाँ एक्सप्लोरेशन करती है, राइट? कंपनी हैज अ थर्ड थिंग ऑल्सो, दैट इज ए कर्जिसन, जिसमें कंपनी का कुछ काम चल रहा है, राइट? इन टू ओनली company has done 530 BOPD. But what I like about this next year, if you see the company's projection, बहुत कंजर्वेटिव प्रोजेक्शन भी अगर आप देखेंगे, दिस FY24 में जो उनका गाइडेंस है वो 750 इज अ बेस केस, मतलब मिनिमम दे आर एक्सपेक्टिंग 750 एंड ऑप्टिमिस्टिकली दे आर लुकिंग फॉर 1200. सो लास्ट ईयर जो किया कंपनी ने उससे ऑलमोस्ट अगर बेस केस भी पकड़े तो 50% है, एंड अगर ऑप्टिमिस्टिक केस पकड़े तो ऑलमोस्ट 120%. सो there is some good guidance, but these weekly quarterly numbers are okay. I have bought this stock personally, yeah, looking at this, and I will explain you what are the changes in company's price performance also, right? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कंपनी वॉज कंसिस्टेंटली 2014 से कंपनी कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रही थी. कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस नहीं थे अगर आप देखेंगे, इट वॉज ब्रॉडली इन डाउन, राइट? सो कंपनी हैज़ ब्रेकन दिस ट्रेंड ऑफ ऑलमोस्ट यू कैन से 8 years, राइट? दैट इज़ अ फर्स्ट गुड थिंग. दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, कंपनी जो भी स्टॉक है वो जब भी ऊपर जा रहा है तो देर इज़ अ गुड वॉल्यूम, राइट? दूसरी चीज़ अगर हम वीकली चार्ट भी देखेंगे तो अगर आप देखेंगे कंपनी ने जो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड था उसको चेंज कर दिया है, एंड देर आर सम गुड. जो कंपनी का नया मैनेजमेंट आया उसके बाद अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली कंपनी इज मेकिंग हायर लो, राइट? एंड आफ्टर द न्यू मैनेजमेंट, कंपनी ने जब न्यू मैनेजमेंट आया उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी कंपनी इज इन द रेंज. सो 150 to 250. आई लाइक दिस स्टॉक जिस तरह से कंपनी का प्रोजेक्शन है और जो प्राइस स्ट्रक्चर दिखा रहा है. सो वी कैन लुक एट द अपॉर्चुनिटी इन दिस स्टॉक. जब तक ये स्टॉक प्राइस वाइज it does not go below 180, 170, 180, we can look for some good upside, right? These are all the bad that you can look for investment. और जहाँ पे भी शॉर्ट टर्म में भी आपको कहीं पे भी इसमें सेटअप दिखे तो यू कैन लुक. आई थिंक आई एम लुकिंग दैट दिस कंपनी कैन गो टूवर्ड्स दिस ओल्ड ग्लोरी, राइट? जिस तरह से कंपनी के प्रोजेक्शंस है एंड द न्यू मैनेजमेंट इज वर्किंग ऑन, राइट? सो ये क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा ठीक है, तो मे बी आप देखिए यहाँ पे मे बी आपको नीचे कहीं मिल जाए 250, 240, 230. So you can look for the opportunities, look for your setups, right? This is how I look for the opportunities in medium to long terms, right? And there is a company called Equitas. Equitas के भी numbers अच्छे आए. Let me explain you, काफ़ी सब फाइनेंशियल कंपनीज के नंबर अच्छे आए. तो Equitas भी काफ़ी टाइम से अगर आप देखेंगे तो numbers are good broadly, right? But if you see, let me explain.
मुझे ये इस चार्ट में क्या अच्छा लगा मैं आपको बताता हूँ। पहली बार कंपनी ने नया हाई बनाया, उसके बाद कंपनी ने अगेन इक्विटास ने कोशिश करने, देन फेल ब्रेकआउट हो गया, अगेन यहाँ पे थोड़ा कोशिश किया सेकेंड टाइम ऊपर जाने की, बट फेल हो गए, देन अगेन दे हैव ट्राइड राइट, यहाँ पे फिर से कोशिश किया 1 2 देन थर्ड राइट। एंड इस बार अगर आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम्स भी ज़बरदस्त आए हैं, तो ये रिजेक्शन जो हुआ है ना वो भी हाईएस्ट वॉल्यूम से हुआ है। तो जब भी जो भी दिन मैं आपको बताता हूँ लेवल एग्जैक्टली यार, बेसिकली ये जो वॉल्यूम हुआ था उसको यहाँ पे कम नहीं, बट देर इज सम गुड वॉल्यूम आई एम एक्सपेक्टिंग हियर ऑन दिस साइड। अगर ये एरिया जो अगर आप देखते हो इक्विटास में, वो एरिया है ऑलमोस्ट 78 को अगर वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है, आई कैन लुक फॉर द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी जहाँ पे एग्रेसिवली यू कैन बैट एंड विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, सो यू कैन लुक फॉर सच अपॉर्चुनिटीज। So thank you all of you for your time and don't forget to subscribe the channel and also give your feedback। आप comments में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये हमारा जो नया लर्निंग सीरीज़ है वो कैसा लग रहा है, and don't forget to subscribe and like, and if you like share with your friends and family and give us your feedback। Thank you all of you, see you all again next time।